Good evening and welcome. You're watching News Break with me, Sanket Upadhyay. It's Holi tomorrow, and it seems that there is perhaps some good news in sight for the flat buyers as far as Noida residents are concerned, Noida and Greater Noida. You see, what has happened is that the court, in fact not the court, the NCLT has decided in favor of allotting flats owned by the Jaypee Group as many as 20,000 home buyers in the NCR group. 20,000. These are flat buyers who bought flats from Jaypee Infratech. This is a company, Jaypee. They bought flats, and now those flats have been handed over to another company. The road has been cleared. So there are as many as 20,000. The Insolvency Court, NCLT, has approved this takeover of Jaypee. The name of the group is Suraksha. Suraksha Group's resolution plan has now been approved. The group is going to sanction 3,000 crore rupees of working capital for this project completion. This is a huge relief for homeowners waiting for homes for over a decade. So this is very, very significant. Now, what does this mean for homeowners? Flats will start getting delivered from 6 months onwards in various phases. There is a 4-year delivery period for approximately 20,000 flats. The land which was assigned to a trust to pay for the compensation of delays to these home buyers, many of them waiting for decades for their flats and have been paying EMIs for 10 to 13 years with no flat in sight. Now, what do these home buyer associations say? They are rejoiced. They are saying that this is a landmark order. They say first time that home buyers have been recognized as financial creditors like banks. It has taken 6 years instead of the stipulated 330 days for this resolution. Remember, there was a double burden on the home buyers because they were paying their rent as well as a home loan EMI for the past 13 years, 1-3. Now you see, in Noida and Greater Noida, there is a huge problem. And why is that problem? Let's quickly tell you that. There are massive problems in these two cities of NCR. Majority of the undelivered flats are in Noida and Greater Noida. In fact, the NCR region, the National Capital Region, amounts to 77% of the undelivered houses in the country. That is how massive the crisis is. Many of the flats that have been delivered, there is a problem of registration. So the registry for these flats has not been done. Many of the people who are staying in these flats, they complain of extremely poor construction quality in brand new flats. And also the quality of connecting and arterial roads is a major challenge. In fact, the Comptroller and Auditor General too found major faults in Noida. These are shocking findings from the CAG report in December 2021. This is the audit period of 2005 to 2018. The CAG said that 63% of Noida housing colonies are incomplete. Report was submitted in 2021. The Comptroller and Auditor General says that there is no policy framework for costing of properties in Noida. There is excess floor area ratio resulting in lower reserve price. And out of the 1,30,000 flats sanctioned, occupancy certificate issued is only 44%, which means about 56% people have not got their flats. And that's exactly what the problem is. So in that context, the decision of the bankruptcy court, the NCLT, could that possibly spell good news, at least the beginning of the good news in Noida and Greater Noida? Let's put that to debate. I would like to introduce our guests one by one. We have Mr. Prem S. Kamesra, is a home buyer of Jaypee Wishtown in Garden Isles project. Thank you very much, Mr. Kamesra, for joining us. We also have Abhishek Kumar, President of the Noida Extension Flat Owners Welfare Association. Adil Singh Boparai, spokesperson of the Congress Party, and Sunil Bharala, senior leader of the Bharatiya Janata Party, is also with us. I want to begin with the flat buyers first. So, Mr. Prem, I want to start with you.
the long wait of 13 years, do you feel that finally there is some relief that has come your way? Certainly, this is a sort of a ray of light. I don't know how strong or how weak it is, because there's a lot more to go. We are looking at 4 years for getting all the flats, but still for the last 7 years, since the time the company went into insolvency, there has been a complete impasse. So with this judgment, all of us are hoping that the deadlock is broken and activities will commence soon in the township. Abhishek, I want to come to you now. What's the larger problem? There are many projects in Noida and Greater Noida. Even in Greater Noida, the area where you are active with your association. What exactly is the nature of the problem? And has this been taken up with the authorities or not? बिल्कुल संकेत जी, मुख्य रूप से मैं अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो दो सबसे बड़ी रीजन है। एक तो है डिले पोजीशन एंड दूसरी है रजिस्ट्रेशन। और डिले पोजीशन जो फ्लैट है वो 2010 से लोग आज भी अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, और उनका और कई सारे ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जो मतलब कोर्ट गए हुए हैं, और कोर्ट में भी उनकी एक लंबी प्रक्रिया, चाहे वो आप कहें NCLT में है या फिर कंज्यूमर फोरम में है। लगभग नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं तो आज के डेट में भी आप 50 से 60 बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके मसला कोर्ट में चल रहा है, और उनके डिसीजन का आज भी बायर्स इंतजार कर रहे हैं। दूसरी है रजिस्ट्रेशन। जिन घर खरीदारों को घर मिल चुका है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिल्डर्स ने प्राधिकरण को बकाया नहीं चुकाया, और प्राधिकरण इस वजह से रजिस्ट्री रोक रखा है। लेकिन फ्लैट बायर्स को देखें तो उनकी कहीं से कोई भी गलती नहीं, उसने अपना 100% पेमेंट दे चुका है बिल्डर्स को। जिनको घर नहीं मिला उन्होंने 95% दे चुका है, और जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई उन्होंने 100% दे के अपने घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, कोई भी समस्या का समाधान अभी जो मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ, चाहे वो जेपी देखें, यूनिटेक देखें, आम्रपालिका देखें, वो सब कोर्ट से ही समस्या का समाधान हो रहा है। लेकिन कोर्ट में एक लंबा समय लग जा रहा है। जैसे आप देखिए, जेपी वाले में अभी इनका 6 साल लगा है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से भी हमने रखा था कि वो एक मॉडल बनाए जिससे समस्या का समाधान हो जाए, कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े बायर्स को। तो कभी बिल्डर्स कोर्ट चले जाते हैं तो वो जानबूझ के लंबित करते हैं, और होम बायर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो आखिर में वो भी कोर्ट चले जाते हैं। तो सरकार को इसमें आगे आकर समस्या का समाधान। Okay, Adil Singh Boparai, I want to come to you now. This is great relief for the people who have been waiting for their flats. A majority of these undelivered promises and flats are in Uttar Pradesh, and those who have got entry into their own flat, their flats are not registered, right? Which means they are not original claimants. That process is not complete. Roads are not complete. Everything is incomplete. Who do you think is to blame, and what is the time-bound solution to this problem? Only courts? Well, Sanketji, I think we must welcome the order passed by the NCLT. It is certainly, we see some light at the end of the tunnel. However, I think this is not the end of it, because now once the infusion happens by the successful resolution applicant, there has to be monitoring of this project. We have to ensure that the project sees the light of the day, because there are 20,000 families involved in this particular project alone. So having said this, of course, courts are one via media to enforce your rights, but I think there is also a failure on the part of the regulatory landscape. You have the RERA in every state now. So obviously when there is delayed possession, delayed handing over of possession, or when there is diversion of funds by the builders, I think the need of the hour is that the Urban Development Ministry, and more importantly the RERA, because now this is a dedicated body to look into the real estate sector, I think they need to step up. They need to ensure that these fly-by-night operators, builders, don't deceive and dupe gullible investors. Because see, this builder was a huge builder. I mean, he's building dams. I'm talking about the problem vis-a-vis the entire industry. I don't want to pick one builder over the other, but this is a problem which is across the board. And how do you solve the problem without finally going to the court? I think that's the question which you put to me. Yeah. So therefore, the answer is that the regulatory mechanism, which is RERA, that needs to be strengthened. As long as you don't strengthen RERA,
and you don't ensure that timelines are followed in letter and spirit, problems like this will reoccur. Because today this is a huge problem, not just in Noida or Greater Noida, even in Gurgaon, even in Faridabad, even in other parts of the country, which are urban or metro conglomerates. Exactly. So In fact, a recent study found that, Mr. Bharala, 77% of these undelivered properties, 77% पूरे देश में जो अनडिलीवर्ड फ्लैट्स हैं और घर हैं वो यहीं एनसीआर में हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में, और उसमें भी अधिकांश फ्लैट नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये इसको सुलझाना एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए? अब तो 6 साल आपकी सरकार की भी हो गई, अब कहां आप पुरानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए संकेत जी, आपको मैं पहले तो होली की शुभकामनाएं दूंगा और सभी मित्र बंधुओं को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको देखने में भी लगा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से ये हमारी सरकार बनी है और उस पर पूरा काम भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि रेरा जैसी एजेंसी को बना करके जो फ्लैटों के मालिक हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का भी एक संस्था गठित की है और वो बहुत अच्छे से उस पर काम भी कर रही है। बहुत सारे जो बिल्डर के द्वारा या किसी प्रकार की जो अनियमितताएं हैं, उनका निस्तारण करने का वहां काम शुरू हुआ है। ये हमारी सरकार में ही शुरू हुआ है और आपने देखा भी होगा अपनी सरकार आने के बाद में इस पर पूरे जोर तरीके से काम हुआ है। दूसरी ओर आपने देखा होगा जहां बिल्डरों की भी चिंता की है सरकार ने बीच में, काफी चाहे वो ब्याज का पैसा देने का माध्यम हो, चाहे वो सब्सिडी का माध्यम बना, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का भी माध्यम हमारी सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं, भराला जी, कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। देखिए ऐसा है कि हमने इतना किया, ये किया, ठीक है, मामला पेचीदा हो गया, लेकिन इसके सॉल्यूशंस, आदिल सिंह बोपरा, यू सी राइट नाउ one gets a sense that this whole process is painfully slow, and this is just the tip of the iceberg as far as problems are concerned. I know faulty construction quality is also a huge concern. The lack of registry of your own flat or property is also a huge concern in this very same Noida and Greater Noida. Not just that, Sanket, you have builders selling one flat to संकेत जी, मेरी बात थोड़ा सा रह गई थी अभी। मैं अभी आता हूं वापस, आदिल। You're right, this is just the tip of the iceberg, and I want to, on behalf of the Congress party, we want to take a bipartisan situation. The fact is that the courts had to come to the rescue of an ordinary citizen. Obviously, that means that there is an executive and a regulatory failure. This is not the time to pat our backs. This is not the time for the government of the day to pat its back for its own failures. The fact that the courts, the NCLT, had to come to the rescue means that RERA failed. It means that the state apparatus failed. So therefore, there are multiple problems in the housing sector. Let me ask this question of the flat buyers. Mr. Prem, I want to ask you, do you feel that the institutional mechanism that the state government said will help the buyers has not really delivered, that you have to look No, I personally feel the institutional mechanism and the government has miserably failed the buyers. In fact, this NCLT process dragged on for the last, if I'm not wrong, about 2 years, only because the government's authority, Yamuna Expressway Authority, put an objection to the plan, which has finally been rejected by the court. So it is not that the government has been of any help to the home buyers. They, in fact, all these problems, most of the problems could have been done away with had the government oversight and the government's sensitivity and compassion towards the home buyers had been there. There is a lot of lip service, be it any party. This is not about party politics, but the government framework as such has been our experience. We have been suffering, and it has not been helpful to the home buyers at all. अब अभिषेक, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं. I mean, has this matter been taken up with the local representatives? Like in Noida, you've got extremely high-profile MP. You've got, this entire region has 3 MLAs.
these are pretty high-profile people who claim and claim of their clout and access. बिल्कुल इन लोगों से बात संकेत की, जी, इन्होंने क्या किया है? What have they संकेत जी, done? मैं इनके सामने ये समस्या तो 2012 से लेके जा रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार भी नहीं थी, तो पहले ये कहते थे हमारी सरकार को आ जाने तो फिर करूंगा। आज हम 2023 में हैं, तो आप ये पुरानी सरकार पे ही दोषारोपण कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि यहाँ पर रजिस्ट्री और डिले पोजीशन के साथ साथ सबसे बड़ी मुद्दा है सुरक्षा को लेकर। मैं सुरक्षा के बारे में बताऊं कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को, और अथॉरिटी ने कहा था कि हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएंगे। जब गुड़गांव में एक बिल्डिंग गिर गई थी, उसके बाद भी स्ट्रक्चरल ऑडिट का कोई भी एक इनके पास कोई ठोस ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट इन्होंने करवाया, किस सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर में उनकी मजबूती क्या है। अब आए दिन जब यहाँ घटना घट जाएगी तब फिर ये अथॉरिटी या प्राधिकरण जागेंगे, उसका ये इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ घटना घटे। दूसरी और बात करूंगा फायर ऑडिट की। अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये फायर ऑडिट करवा दे तो मैं आपको मैं मतलब लाइव शो में बता रहा हूँ कि 70% सोसाइटी में फायर ऑडिट गलत पाया जाएगा। फायर ऑडिट में वो गलत पाया जाएगा क्योंकि एक ईमानदार अधिकारी से वो करवा के देख लें। तो एक बहुत बड़ी खामियां हैं इनके अंदर। आप किसी भी सोसाइटी के बेसमेंट में चले जाइए, उस सोसाइटी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इस तरह के दर्जनों सोसाइटी हैं जहां पर ना तो फायर फाइटिंग काम करता है, ना तो बेसमेंट की हालत खराब है, पिलर कमजोर हो चुके हैं, कई सोसाइटी ऐसी है। तो यहाँ पर तो समस्याएं हैं। और हमारे माननीय जो बैठे हुए हैं सुनील जी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो थोड़े उनको अपडेट होना चाहिए कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिससे सरकार की रेवेन्यू की लॉसेस है, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। लोगों को घर नहीं मिल रहा है। मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, these are flat buyers who have said that the government system miserably failed. 6 साल से अब आपकी सरकार है, अब आप और पीछे जाकर के बताना छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए कि 6 साल में आपने क्या किया है, संकेत जी, और ये जो दिक्कतें हैं इसका निवारण आप कैसे करेंगे? संकेत जी, आप जानते हैं मैं पीछे की सरकारों पर ज्यादा दोषारोपण करने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं काम में विश्वास करता हूं, मैं परिश्रम पर विश्वास करता हूं। अभी आपने सुना वो कह रहे हैं बिल्डिंग कमजोर है, स्ट्रक्चरल ऑडिट चाहिए, फायर ऑडिट नहीं हुआ है, अभिषेक जी ने समस्या बताई, रजिस्ट्री नहीं हुई है, लोगों को मकान नहीं मिले, मकान नहीं बने। 6 साल हो गए आपकी सरकार को। फ्लैट दे दिए हैं बिल्डरों को, उनको कब्जे नहीं मिले, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, ये सारी बातें आज सामने आ रही हैं। वैसे इन दिस वेरी केस मिस्टर भराला, सरकार लोगों के खिलाफ थी। चैनल के माध्यम से पूरे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं। मिस्टर भराला, you must have just heard Mr. Prem who said that this entire matter was flat owners versus government. आपकी अपनी अथॉरिटी अदालत में फ्लैट ओनर्स के खिलाफ गई थी। नहीं, मैं आपसे इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं। आप इस बात को समझ लीजिए पहले तो। क्या है फिर ये बिल्डर्स के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों? बाद में अभी मैंने TNT वाला उत्तर प्रदेश सरकार से जांच मुझे बताइए, ये बिल्डर्स के खिलाफ भी एक्शन कराया है मैंने। इतनी वफादारी क्यों? आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो मुझे इस सब चीजों की जानकारी दे। इस मामले को मैं उठाऊंगा। Why do you come across as pro-builder, Mr. Sunil Bharala? संबंधित उनसे भी हम वार्ता करेंगे। Why does the government come across as anti-flat buyers and pro-builders? Can I ask you this question? Why? ये बिल्डरों के पक्ष में आप क्यों खड़े होते हैं, फ्लैट बायर्स के पक्ष में क्यों नहीं होते? नहीं, हम आपको गलत फहमी है, आपको सुनना गलत पड़ा है। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि TNT बिल्डर के खिलाफ मैंने बड़ी कार्रवाई कराई है। आपने देखा होगा पूरे प्रदेश ने, समाचार पत्रों में, आपके टेलीविजन ने नहीं चलाया होगा, वो बिल्डरों के दबाव में होगा, वरना तो पूरे देश की प्रदेश की मीडिया में छपा है। TNT कंपनी गाजियाबाद को मैंने उसके खिलाफ जो है एक्शन कराया था। मामला जितना बड़ा है, फ्लैट मालिक सुनील भराला, आदिल सिंह बोपरा, I want to come to you now. Can we one by one please? Last 3 minutes, so one by one. Adil Singh Bopra, do you feel that there must be an assurance and a guarantee that these issues will be resolved in a time-bound manner? Otherwise, we are going round and round in circles. विषय बताएं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई Sunil Bharala, one moment. Yeah, we have limited time. Yeah. You know, the problem is not deficiency of laws or deficiency of rules. The problem is lack of enforcement of rules. You have RERA, but you have a state apparatus which is colluding with the builders. This is the problem. If the government was doing its job properly, this situation would not have reached its stage. Now, let me share another standpoint from you. There are banks which have loaned money to Jaypee and other business real estate developers. What about public money?
Now, once the company goes into insolvency, once the company goes into the IBC process, private banks have to take a haircut. So there's also loss of public money. That is another issue which the state government needs to contemplate and address. So therefore, the need of the hour is enforcement of laws. We just don't want lip service. And I completely empathize with the home buyers. निश्चिंत रहिए, ऐसे They have बिल्डरों our के full खिलाफ solidarity. अगर कोई The need आपके of the पास hour is सबूत enforcement of कागज है, law. Okay, आपकी okay, one by one, समस्या है, please. वो हमें Let's hear the home buyers one हम more उनके time. खिलाफ उन Mr. बिल्डरों के Prem खिलाफ Singh. कार्रवाई कराएंगे। सर, through your channel, I want to appeal to the government. हम लोग थक चुके हैं, बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। अब कम से कम इस NCLT के ऑर्डर के अगेंस्ट सरकार कोई अपील ना करे। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी कोई अपील करके फिर से इसको वापस लीगल चक्रव्यूह में ना फंसा दे। दिस इज माय अपील टू द गवर्नमेंट थ्रू योर चैनल। बात को अवगत कराइए पूरी तरीके से, और कहाँ आपकी ये बड़ी समस्या है जो बायर्स यानी कि जो फ्लैटों के मालिक हैं, जिनकी जो खरीदार हैं, जो लोग जिनकी परेशानी है, हम उन फ्लैटों के खरीदारों के साथ हैं, उन मालिकों के साथ हैं। नहीं, ये बोल देने से नहीं होगा ना, अदालत में तो आप साथ में नहीं थे, उनका वही कहना है। अभिषेक लास्ट वर्ड प्लीज। ओके, सुनील जी देखिए, हमारी में आप चूंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए जब समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है सरकार के लिए बहुत छोटी समस्या है, और हमें भरोसा भी है माननीय मुख्यमंत्री जी पे। तो देखिए, एक रजिस्ट्री की ये है कि आप प्राधिकरण को बोलेंगे, प्राधिकरण रजिस्ट्री चालू कर देगा, लेकिन प्राधिकरण जब तक मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं आएगा, प्राधिकरण हमारी रजिस्ट्री स्टार्ट नहीं करेगा, और इससे सरकार को कम से कम 30,000 की रेवेन्यू आएगी। और आप क्यों नहीं मॉडल अपनाते हैं, अमरपाली के मॉडल अपनाइए। आप देखिए, जेपी वाले ने आज इनके लिए इनको घर सुरक्षा जब आया तब इनको घर की उम्मीद है। तो आप ये सब मॉडल को अपना कर, अमरपाली मॉडल हो या फिर जेपी मॉडल हो, आप जिनको घर नहीं मिला उसके लिए एक सेम फार्मूला लेके आइए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है सुनील जी, कि प्राधिकरण को अपने पैसे की चिंता सबसे पहले है। प्राधिकरण का कहना है कि सबसे पहले मेरा पैसा दो, उसके बाद बायर्स बाद में है। जब आप बायर्स को सबसे पहले मानना स्टार्ट कर देंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यकीन मानिए, आपके लिए पहली प्रायोरिटी बायर्स होना चाहिए, जो आपके वोटर्स हैं, जो यहाँ के जनता हैं। जिस दिन आप इनको पहली प्रायोरिटी मान लेंगे, समस्या कुछ भी नहीं होगा। अभिषेक जी, हमारी what perhaps gives the government great comfort is that in this region it is BJP all the way. लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे और अथॉरिटी में बात करेंगे, तो आपको ये लगेगा कि पहली प्रायोरिटी बायर्स नहीं है। I've completely run out of time, but many thanks, Mr. Prem, Abhishek, Adil Singh Bupre, and Sunil Bharala for joining us. We're stopping for a short break at this moment. When we come back, some breaking news of a blast in Dhaka.